कामयाबी तभी मिलती है लाइफ में जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े हो जाते हैं। हर किसी का अपना वजूद होता है, क्योंकि कोई आपसे बेहतर ज़रूर होगा, समझदार होगा, पर आप जैसा कोई नहीं होगा। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम शिमला। आप पूछोगे शिमला में क्यों? येस, आई एम हियर क्योंकि मेरे स्पीति वैली का ट्रिप यहाँ से ही शुरू होगा। स्पीति वैली वुड बी एन अमेजिंग एक्सपीरियंस बिकॉज मेरे बकेट लिस्ट में सबसे ऊपर स्पीति वैली का ही नाम था। सो येस, द ट्रिप विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। आज के दिन हम शिमला में ही रुकने वाले हैं एंड द जर्नी टू स्पीति वैली विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग। Right now the plan is simple. I'm moving towards the Mall Road. We will explore some cafes over there and वहाँ पे famous Christ Church है. We'll click pictures over there and we'll sit over there and chill for some time. And evening में we'll be going to Jaku Temple. Jaku Temple is very famous temple over here at Shimla because वहाँ पे हनुमान जी की एक बहुत ऊंची स्टैचू है एंड सनसेट भी बहुत अमेजिंग होता है वहाँ पे। सो या आई विल कीप यू पोस्टेड रिगार्डिंग एवरीथिंग सिंस आई एम ट्रैवलिंग सोलो। यहाँ पे होटल रेंज 500 से लेके मैक्सिमम हाउ मच यू कैन पे है। तो ये हैव बुक्ड अ नॉर्मल रूम फॉर 500 रुपीज़ नियर मॉल रोड। वन टिप for people like for families or for couples or people who are traveling solos as well, try to book the hotel near the Mall Road because the tourist attraction what is there in Shimla is near the Mall Road. It is around 2 to 3 kilometers, so you can go by walking. So yeah, really excited. I'm at the famous Christ Church at Shimla Mall Road. Look at this. This is the second oldest church in North India. First oldest church St. John Church है मेरठ में and this church was built in 1857 in Nat Geo style. जो भी आप फोटोज़ देखते हो Instagram में by the famous influencers or content creators, it has been clicked over here at the Mall Road. Incredible. I'll chill over here for some time and then I'll move to Jaku Temple for the sunset. I'll see you soon. Hey guys, I have just got into this very famous cafe at the Mall Road, Chung Fa Dhaba, which is famous for his Chinese food. This is walkable distance from the Mall Road. Around 4 से 5 मिनट में आप यहाँ पे पहुँच सकते हो. This is one of the oldest Chinese restaurant that has been built in Shimla Mall Road. So do visit at this place because first of all the reviews of this place is amazing. They serve amazing Chinese food. The owner itself makes the food and he's such a sweet guy. He's 73 years old and he runs this place. The best part of this, though it is a very small restaurant that he has set up, but the food that he serves is totally worth it. So it's a highly recommended place. Do visit Chung Fa Dhaba whenever you are at Shimla. It's at the Mall Road. That's the owner of this place. Uncle, thank you for the food. Oh, thanks a lot. Thank you. It was really nice meeting you.
I'm at the famous Indian coffee house जो कि मॉल रोड शिमला में है. And the best part of this place is this कि इन्होंने अपने essence को भूले नहीं है, because this coffee house was built at 1958 and if you look around, the infrastructure and everything they have set up is still the same. In fact, जो यूनिफॉर्म पहनते हैं जो वेटर्स, they have kept the same thing from 1958, which is pretty cool. I'm at the famous जाकू टेम्पल. ये वही जगह है जब हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे, तो इसी जगह पे उन्होंने थोड़ा रेस्ट किया था. लुक एट दिस स्टैचू ऑफ हनुमान जी. दिस इज़ 108 feet long and it is quite incredible. I'll sit over here for some time because the positive energy जो ये जगह पे मिल रही है, I cannot express that in words. I'll sit here for some time and then I'll move towards the mall road. I'll see you soon. Cheers. अच्छे लोगों की सबसे बड़ी खूबी पता है क्या है? कि उन्हें याद रखना नहीं पड़ता, बस वो याद रह जाते हैं.